Hi everyone, I hope that you all are good and fine. So in today's session we will solve the last question of this exercise, question number 14. Question number 14 is followed by 5 segments students, and here one by one we will solve it. What question number 14 is stating? It is stating that in the adjoining figure, means this figure, okay, in the adjoining figure name the following pair of angle. आपको बताना है इन pair of angles को, पेयर मीन्स जोड़े में, ठीक है. नाउ हियर यू कैन रेफर दिस फिगर स्टूडेंट्स एज आई हैव ड्रॉन. नाउ वन बाय वन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ द वेरी फर्स्ट सेगमेंट इज सेइंग ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. आपको टू पेयर ऑफ ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताना है. टिल नाउ वी केम अक्रॉस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ओनली, है ना. What I told you that whenever two lines intersect at a point, then formation of 4 angles possible. So vertically opposite angles are equal. Now here in the question it is saying obtuse vertically opposite angle. So what is the meaning of obtuse? Obtuse means the angle measurement will be greater than 90 and lesser than 180. So you have to take care this much only, and then you have to name two obtuse vertically opposite angles from this figure, ठीक है. Now see students, here if you will see this line AC and line BD, they are cutting at point O. कौन कौन सा line AC and line BD, ठीक है. So they are cutting at point O. Formation of 4 angles took place. Okay, now if you will see, this is one angle, this one angle, this is one pair of angle, vertically opposite angle. Are they obtuse vertically opposite angles students? No, they are acute vertically opposite angles as their measure is less than 90 degree. ये क्या है? acute vertically opposite angles है. Now remaining will be obtuse vertically opposite angles. Okay, now which one is remaining? This angle, this whole angle, and then है ना, this line and this line. So this and this angle, so this angle, this line, and this angle and this angle, right? So now which angles are remaining students? This angle and this angle are vertically acute opposite angles. So this angle starting from here up to here, okay, this angle and this angle, okay, these will be obtuse vertically opposite angles. So now you can name. See students, we have to name this complete angle from here to here. So you can start from this end, that is D point, or you can start from point A. So you can name this as angle AOD or angle DOA. Okay, so here you will write, I am going to write it here. I hope you will manage students. Angle, I am starting from AOD, and which angle is there? Now you have to name from here up to here. So you can start from point C or you can start from point B also. Okay, I am going to start from point B. So angle BOC. Which angle? Angle BOC. I hope you can see it students. So these are two pair of obtuse vertically opposite angles. Now moving to next segment students, adjacent complementary angles. So we know students that complementary angles are nothing but their measure is equal to 90 डिग्री. तो हमने यहाँ 2 एंगल फाइंड करना है जिसकी मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है. टू एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. वन मोर थिंग दैट वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड कि वो एंगल्स, जो 2 एंगल हम ढूंढेंगे वो एडजेसेंट एंगल होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री भी होना चाहिए. मतलब कि लगकर होना चाहिए और उसकी सम दोनों भी एंगल की सम जो है वो 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 90 के बराबर होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, ठीक है. तो ऐसा 2 एंगल्स देखना है अपने स्टूडेंट्स. सी इफ़ यू विल कंसिडर दिस वन, this angle students, if you will consider this angle, look at my hand, this is 90 degree, okay, and if you will consider another angle, it will exceed 90 degree, है ना.
तो वो नहीं लेंगे. नाउ इफ यू विल कंसीडर दिस एंगल देन यू कैन नॉट कंसीडर दिस एंगल एज इट विल गो बियॉन्ड 90. ओके. नाउ इफ यू विल कंसीडर दिस एंगल एंड दिस एंगल अगेन इट विल गो बियॉन्ड 90. ठीक है. नाउ ओनली वन ऑप्शन इज रिमेनिंग स्टूडेंट्स. विच ऑप्शन? दिस एंगल this angle and this angle. Okay, both are adjacent angle as this line AO is common arm and O is the common vertex. तो ये दोनों एंगल जो है एंगल, सो यू कैन नेम इट, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हियर और हियर. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम, सो एंगल BOA एंड एंगल EOA. These are two adjacent complementary angles. Okay, now I am going to write angle BOA and angle EOA students. So these are two adjacent complementary angles. Now next one, equal supplementary angle. मतलब बराबर दो एंगल आपने बराबर ढूंढना है जो जिसका मेजर सप्लीमेंट्री हो यानी 180 हो. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखते हो इस स्ट्रेट लाइन पे स्टूडेंट्स, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पे हमारा 3 एंगल बन रहा है बट हमें 2 ही एंगल चाहिए. ठीक है. अब आ जाते हैं हम इस स्ट्रेट लाइन पे नीचे के लाइन पे. ऊपर में तो देखो इस स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, किसकी? AC की. ठीक है, इसकी AC की. तो AC पे कितने एंगल्स फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स? ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, यानी 3 एंगल है. तो वी नीड ओनली 2 एंगल्स. ठीक है. नाउ इफ यू विल सी द बिलो एंगल AC पे ही, AC लाइन पे ही अगर नीचे के एंगल को देखते हो देन हियर वी आर हैविंग 1 एंगल दिस वन एंड 1 एंगल दिस वन, मीन्स वी आर गेटिंग 2 एंगल्स. बट इन द क्वेश्चन व्हाट इट हैज बीन सेड कि 2 इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल आपने ढूंढना है. मतलब 2 इक्वल एंगल ढूंढना है जिसका सम जो है वो सप्लीमेंट्री हो, यानी एक 90 होगा दूसरा भी 90 ही होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये भी नहीं होगा. ओके. नाउ वी विल सी दिस लाइन सेगमेंट स्टूडेंट्स. विच लाइन सेगमेंट? BD. विच वन? BD. एंड इफ यू विल सी हियर OE is the perpendicular. So here this angle, this complete angle is 90 and this again complete angle is 90. Okay, understood? कौन से लाइन पे देखना है? BD पे देखना है. ठीक है. यहाँ पे ये जो एंगल है एक ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और दोनों भी इक्वल है और सप्लीमेंट्री है. So you can start naming from here or from here anywhere. Okay, I am going to start from B. So here angle BOE and angle DOE. Right students? Now next one is unequal supplementary angle that I have already explained to you. है ना. unequal कौन सा आया? ये देखो इस लाइन पे है ना, AC लाइन पे कौन सा आएगा? ये एंगल प्लस ये एंगल है ना. ये बोथ आर unequal angles. One is acute angle, another one is obtuse angle. ठीक है. तो we will write here. So for writing this angle you can start from here or here. I am going to start from here. So it will be angle AOB. And for writing this angle you can start from B or C. I am going to start from B. So here angle BOC. These are two pair of angles which are unequal and supplementary, जो कि बराबर नहीं है और सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. और भी आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं बट आई एम गिविंग यू वन. ओके, यू कैन फिश आउट सम मोर पॉसिबिलिटीज, सम मोर possible answers. Okay, now moving to next and final segment students, last segment. Here you have to find adjacent angles that do not form linear pair. ऐसे 2 adjacent angles आपने ढूंढना है जो कि linear pair नहीं बनाते हों, मीन्स देयर सम मस्ट नॉट बी इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. सो हियर वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ angles, adjacent angles whose sum or those angles are not forming linear pair. बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं जिससे वो लीनियर पेयर नहीं बना रहा है. जैसे कि देखो यहाँ पे सी दिस एंगल and this angle, both are adjacent angles or not? This is the common arm, है ना. They are not forming linear pair, so you can write it. Now I will explain you
the whole question, some more possible answers, but I will write only one or two answers. Okay, so because these all voice are recorded, so you can write it from your side also. So I will write only one or two answers. Okay, now see, this angle and this angle, both are adjacent angles and they are not linear pair. How much they are? They are for going up to 90 degree only. Then again next this angle, I will start from here. This angle, मेरा हाथ को देखो स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, अगेन दे आर नॉट फॉर्मिंग लीनियर पेयर, है ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों भी एडजेसेंट है, ये कॉमन आर्म है और ये कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये एंगल और ये एंगल, अगेन दे आर एडजेसेंट एंगल बट नॉट फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अगेन स्टूडेंट्स, ये एंगल, नो, नाउ वी कैन नॉट टेक। ओके, सो दीज वेर द पॉसिबिलिटी. Okay, this angle, then this angle, this angle, this angle and this angle, so these were the possibility. Now if you will consider this angle and this angle, so they are adjacent angles students, okay, but they are forming linear pair. वो क्या कर रहे हैं? linear pair बना रहे हैं, so we will not consider them. So you can, I am going to write this one students, okay, this angle and this angle, you can start from here. So angle BO A and angle AOE, angle and angle AOE. Okay, now more possibility, one more I will write students. Okay, here AOE, BOA and then AOE, correct. Now next is possibility is angle AOE, that is this angle students, this angle and this angle EOD, that is 90 degree, angle EOD. Okay, two possibilities I have written here students. Some more possibilities are there that you have to fish out from your side and you have to write, and I have given you explanation also. So this was your last question of this exercise, question number 14. I hope you might have understood, and thank you for connecting with me.